Good morning, dear student. In the first part of accounting for not-for-profit organization, we have discussed about the basic concept of not-for-profit organization, how it is formed, why it is formed, and for whose benefit NPO work. We have discussed about the books to be prepared by NPO and the sources of income of the NPO. The sources of income are broadly classified into two parts. All the revenue nature income have been discussed in detail, and now income of capital nature will be discussed. And we have already discussed about the life membership fees, special donation, endowment fund received, and now sources of capital nature income of the NPO also include legacy. Legacy refers to the amount or assets to be realized, to be received by NPO from any member or non-member according to his will after his death. It is generally a big amount or assets, so it is considered as source of capital nature. Grant from the government. When not-for-profit organization is established by some donors, some members for public welfare purpose, then government also encourages them. Government provide them grant for purchase of assets required to serve to a particular class of society and to achieve the main object of NPO. So, if it is a grant received only one time during the lifetime of the NPO, then there will be a source of capital nature. Subsidy from the government. Sometimes the government provide the goods, services or assets to the NPO at subsidized rate, at concessional rate. And if it is to be provided only one time, that is for purchase of any assets or to fulfill the main purpose of the NPO, then it is called a subsidy, अनुदान. और ये भी कैपिटल नेचर का सोर्स मानी जाएगी अगर ये एनपीओ का लाइफ स्पैन में एक ही बार मिलता है. फिर सेलिंग प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट. इफ द एनपीओ से इट्स ओल्ड एंड obsoleted assets, then the amount realized on sale of such assets will also be part of the source of capital nature income. Profit or loss on sale of assets will be shown in the income and expenditure account, but the selling price is source of capital nature because it relates to fixed assets. And entrance fees to be capitalized. Unless otherwise given, entrance fees is treated as source of revenue nature. But sometimes it is given in the question that entrance fees is to be capitalized और 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड. अगर ऐसा दिया हुआ है कि प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करना है तो फिर आपको पूरी एंट्रेंस फीस की राशि को कैपिटल फंड में ऐड करना है. और अगर बोला 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड तो फिर आधा पार्ट है वो रेवेन्यू नेचर इनकम हो गई, उसको तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाना है और आधा पार्ट जो है वो कैपिटलाइज करना है. उस अमाउंट को हम बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. इस तरह से ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम ऑफ कैपिटल नेचर हो गए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनपीओ.
though the organization is not for earning profit, but it acquires substantial financial resources from the members and the donors. So there is a need to keep proper record of each and every rupee received as donation, subscription, legacy, entrances, and it should be utilized for the welfare of targeted beneficiaries according to the object of that NPO. And the donor sometimes want to know whether the amount given as donation or charity by them has been properly utilized by the office bearer of the NPO or not. Financial statement will reveal the ultimate position, ultimate operational activities at the end of the year. So NPO are also required and bound to prepare financial statement and publish it for the knowledge of the members and the donors. And sometimes the government also insists them to submit financial statement. Government also want to check whether all the NGO, whether all the NPO are actually working in the interest of the public as a whole, or few people are getting the undue advantage of their position. So there is a need to prepare financial statement and to disclose operational result of the NPO and to disclose the financial position of the NPO in the public interest. So the main account should be prepared as number 1 is receipts and payment account. Number 2 is incomes and expenditures account. And number 3 is balance sheet. So these are the 3 major part of financial statement to be prepared by all the NPO. It is to be published for the knowledge of all the beneficiaries and for the knowledge of the donors and members and other people of the society and even for the government. First of all, receipts and payment account. प्राप्ति एवं भुगतान खाते. If you want to prepare receipt and payment account of NPO, then you must have knowledge of the salient feature of the NPO, main characteristics of NPO, and the financial statement to be prepared, that is receipt and payment account. So what are the characteristics of receipt and payment account? From the accounting point of view, there are some important points to be kept in mind for preparation of receipt and payment account. Number 1, it is summary of cash flow. Summary of cash flow. It means it is prepared from cash flow. It is prepared after preparation of a complete cash flow for the month or for the year. It is a financial statement. Receipt and payment account is financial statement. It is a part of final account. So generally it is prepared at end of the year, but it is prepared from the cash. Number 2, it is prepared after considering all the transactions of financial nature which have taken place during the year. That is why the word for the year ending is used. For the year ending is used
in its heading. Number 3, the word to and by will be used. To and by words are used. To for all debit side item and by for all credit side item will be used. It is a receipt in payment account and it is a matter related to cash transaction, and you know cash is an example of real account. So the rule of real account is applied for preparation of receipt and payment account. Next, items of both capital and revenue nature are considered in receipt and payment account. Both capital and revenue nature income and expenses are considered because it is a cash account, it is a summary of cash accounts. So all cash received and payment during the year will be taken into account. Next one is adjustment are not considered. When it is prepared on the rule of real account, transaction related to cash, so no adjustment are considered. Actual cash received and actual cash paid during the year will be taken into account irrespective of the year to which they relate. कोई भी इनकम, कोई भी रिसीट एंड पेमेंट जो हमारे इस साल में रिसीव हुआ पेमेंट हुआ है, वो सारे आइटम आएंगे, चाहे वो चालू वर्ष से संबंधित हो, पिछले वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्ष से संबंधित हो. हम कोई एक्रूड अर्नड प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट यहाँ नहीं करेंगे. नेक्स्ट, इट स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में हमेशा हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे और वहाँ कैश का ओपनिंग बैलेंस और हमारे बैंक अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिखाया जाएगा. नेक्स्ट, इट हैज टू पार्ट्स. इट हैज टू साइड्स. इट हैज टू साइड्स. The left hand side is called as the receipt side and the right hand side is called as payment side. तो receipt and payment account में दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट में रूल हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो all receipt will be shown in the debit side and all payments will be shown in the credit side. So you can see once again the features of the receipt and payment account. First, summary of cash means it is prepared from cash book considering all cash transactions. Word, the clause for the year ending will be used in its heading. तो हमारा receipt and payment का heading क्या होगा? सबसे ऊपर लिखेंगे receipts and payment account for the year ended 31st March 2020 ऐसे. फिर जो डेबिट साइड का आइटम है उसमें सब में लिखेंगे डेबिट में इनकम आएगी तो टू सैलरी टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू लीगेसी, टू इंटरेस्ट रिसीव, टू डिविडेंड. तो वो सारे रिसीट साइड के डेबिट साइड में आइटम आएंगे, टू वर्ड लगेगा. और क्रेडिट साइड या राइट हैंड साइड कॉल्ड पेमेंट साइड वी विल राइट ऑल पेमेंट्स. तो हम पेमेंट्स के लिए लिखेंगे बाय सैलरी, बाय वेजेस, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय लेक्चर फीस एटसेट्रा.
तो टू एंड बाई का यूज होगा। ये रूल ऑफ रियल अकाउंट बनेगा। तो रूल ऑफ रियल अकाउंट क्या है? डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। इसलिए रिसीट साइड हमारे लेफ्ट हैंड में होगी, पेमेंट साइड राइट हैंड साइड में होगी। आइटम ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आर कंसीडर्ड, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट में पूंजीगत और आयगत प्रकृति की सभी आय और व्यय दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट हमें कब करना पड़ेगा? जब हम कोई अकाउंट है, स्टेटमेंट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के आधार पर बना है, तब हमें ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये हम रियल अकाउंट के रूल में बनाते हैं, इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर इट स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो जब रिसीट एंड पेमेंट बनाएंगे, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट साइड में आएगा टू बैलेंस रीडिंग, और फिर सारी रिसीट लिखेंगे। फिर राइट हैंड साइड में सारी पेमेंट्स लिखेंगे। रिसीट्स में से पेमेंट घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस, और वो लिखेगा, हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। उसमें कैश और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा। क्लोजिंग बैलेंस है वो फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल फंड निकालने के लिए, तो उस पर लिखा जाएगा। दिस इज द पॉइंट। So these are some important aspects related to receipts and payment account which should be kept in mind while preparing receipt and payment account. And now we will consider some silent features of incomes and expenditures account. Another important part of financial statement of NPO is incomes and expenditures account, आय व्यय खाता। तो अगर आपको आय व्यय खाता बनाना है तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, और उसी से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिए गए आइटम्स है और नीचे जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन के, उनकी सहायता से हम ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एनपीओ वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाट आर दोज फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर which should be kept in mind? We will discuss it one by one. Number one, income and expenditure account is prepared to calculate operational result of business. To calculate operational result of NPO. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी गैर लाभकारी संस्था के परिचालन संचालन का परिणाम ज्ञात करना है। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एनपीओ में भी सरप्लस और डेफिशिएंट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते हैं। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उससे हमारे को जो नेट प्रॉफिट है वो नेट लॉस निकलता है। लेकिन जब हम एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिप्लेसमेंट एनपीओ में क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे हमें क्या निकलेगा, क्या पता लगेगा? इससे हमें कैलकुलेशन करना होगा डेफिसिट एंड सरप्लस का। प्रॉफिट मीन्स सरप्लस, डेफिसिट मीन्स लॉस। तो इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेशनल रिजल्ट व्हिच मे बी सरप्लस यानी कि प्रॉफिट, और डेफिसिट यानी कि लॉस, DEFICIT, डेफिसिट मतलब लॉस। तो रिजल्ट ऑफ एनपीओ इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो दूसरा इसका विशेषता होगी प्रिपेयर्ड फ्रॉम receipts and payments account.
It is prepared from receipts and payments. Number 3, it is prepared on rule of nominal account. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. So in income and expenditure account, in the debit side, in the left hand side, we will write all expenses and losses. So debit side is called as expenditure side, and credit side or right hand side is called as income side. Next, in income and expenditure account, debit side will be called as expenditure side, in which we will write all the expenses and losses of revenue nature. So, next point, only item of revenue nature are considered. The clause for the year ending will be used in its heading. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पार्ट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसी एनपीओ के लिए, इसलिए उसमें पूरे साल भर में जो इनकम हुई एक्सपेंसेस वो सारी दिखाई जाती है, इसलिए फॉर द ईयर एंडिंग इज यूज्ड इन इट्स हेडिंग। ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर कंसीडर्ड, यानी कि जो आयगत प्रकृति के आय और व्यय हैं केवल वही दिखाए जाएंगे, इसमें पूंजीगत प्रकृति के आय और व्यय नहीं दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट, prepared on accrual basis. You know there are two bases of accounting, cash basis and accrual basis. जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है वो कैश बेसिस यानी कि रोकड़ आधार पर बनाया जाता है, जिसमें समस्त रोकड़ प्राप्तियां और भुगतान को दिखाया जाता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, आय व्यय खाता है, वो हमारे अकाउंटिंग के एक्रूअल बेसिस के आधार पर बनाया जाता है। इन केस ऑफ एक्रूअल बेसिस, ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर आर कंसीडर्ड irrespective of actual payment of expenses during the year and irrespective of actual amount received during the year। यानी कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो वो हम ऐड करेंगे भले ही हमने पेमेंट नहीं करा है, और अगर हमने कोई एक्सपेंसेज एडवांस में दे दिए, प्रीपेड है, तो वो घटा दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या है, सरप्लस और डेफिसिट का कैलकुलेशन करना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करना, और वो सही लाभ और हानि की गणना, सही अमाउंट है सरप्लस और डेफिसिट की गणना तभी संभव है जब उस वर्ष से संबंधित सभी प्रकार के आय और व्यय का उचित लेखा उपार्जन संकल्पना के आधार पर किया गया हो। सो वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस। तो अगर कोई एक्सपेंसेज प्रीपेड है तो घटाना है, और आउटस्टैंडिंग है तो कंसर्न आइटम में जोड़ देना है, जैसा कि अपन ने लास्ट ईयर 11th में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट किया। तो वो सारे एडजस्टमेंट जो आपने फाइनल अकाउंट बनाते समय किए थे वो यहाँ पे भी होंगे। ऐसे ही इनकम के हमारे दो एडजस्टमेंट थे, क्या, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम मीन्स द इनकम विच यू हैव अर्न
बट यू हैव नॉट रिसीव टिल डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो उसको हम क्या करते थे, एक्रूड इनकम को कंसर्न इनकम में ऐड कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है और फिर वापस बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि एक्रूड इनकम इज राइट टू रिसीव। ऐसे ही दूसरा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट इनकम का वो है अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए पार्ट ऑफ लायबिलिटी, जो हमें इनकम एडवांस में मिल गई है उसके लिए हमने अभी काम नहीं करा तो नेक्स्ट ईयर में करना पड़ेगा। सो अनअर्न्ड इनकम इज ए पार्ट ऑफ लायबिलिटी, इट रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, इसलिए उसको हम कंसर्न इनकम में से सेपरेट करते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो जो अपन 11 में किया था वैसे ही करना है। ऐसे ही एक्सपेंसेज में क्या होता है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है दे आर द पार्ट ऑफ लायबिलिटी, वो कंसर्न एक्सपेंसेज में तो जोड़े जाते हैं लेकिन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। और प्रीपेड एक्सपेंसेज, जो हमारे एक्सपेंसेज जो हमने करंट ईयर में पेड कर दिए बट द बेनिफिट ऑफ विच विल बी डिराइव्ड इन द नेक्स्ट ईयर, तो इट इज जस्ट लाइक आवर एसेट्स, दैट इज व्हाई प्रीपेड एक्सपेंसेज आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंसर्न आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन है, इट इज ए लॉस, इट इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, जो हमने पीएनएल में डेबिट किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय और वापस बैलेंस शीट में कंसर्न एसेट्स में से घटाया था, वो ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। एनपीओ में क्या करना है, जैसे एनपीओ में कोई मशीन भी यूज हो रही है, बिल्डिंग यूज हो रहा है, उसका जो डेप्रिसिएशन काटेंगे वो डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में आ गया वो, और बाद में दूसरी बार कहाँ आएगा, एंड ऑफ द ईयर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एनपीओ की, तो कंसर्न आइटम यानी कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो बिल्डिंग में से घटाकर दिखाएंगे शेष राशि, और अगर अपन ने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन काटा है तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन की राशि एक बार एक्सपेंडिचर में आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय, और दूसरी बार बैलेंस शीट में मशीनरी में से घटाकर दिखाया जाएगा। So all adjustment will be considered while preparing income and expenditure account, as you have already discussed in the 11th standard while preparing final account with adjustment, right? तो ये हमारे एडजस्टमेंट है। उसके अलावा इनकम का भी जो एडजस्टमेंट है वो हमारे मेनली सब्सक्रिप्शन में होगा। तो सब्सक्रिप्शन इज ए प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओ, इसलिए क्या होगा एडजस्टमेंट, यहाँ हम जो एक्रूड इनकम को जगह हम यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज गिवन बाय द मेंबर एंड इट इज द मर्जी ऑफ द मेंबर दैट दे पे सब्सक्रिप्शन टू एनी एनपीओ। व्हेन दे गिव सब्सक्रिप्शन दे डू नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, दैट इज व्हाई द वर्ड एक्रूड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड बाय एनपीओ, इसलिए उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वर्ड ही हम यूज करते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर जो सब्सक्रिप्शन बाकी है उसको हमने ऐड करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर इज जस्ट लाइक एक्रूड इनकम, बट वी डू नॉट यूज द वर्ड एक्रूड सब्सक्रिप्शन, वी राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर वो ऐड करना है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला आइटम को लेस करना कब, when we are preparing income and expenditure account for from the receipt and payment account, then outstanding subscription at end of the year will be added and outstanding subscription at beginning of the year will be subtracted। क्योंकि हम ये मानेंगे कि अगर कोई आय पिछले साल बाकी थी तो वो हमें करंट ईयर में रिसीव्ड हो गई है और वो हमारे करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर ऑटोमेटिकली शामिल है और वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए हम घटा देते हैं। तो हमारा लॉजिक क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ द ईयर इज एडेड इन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज सब्ट्रैक्टेड बिकॉज इट रिलेट टू लास्ट ईयर। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन एक सोर्स ऑफ इनकम है और इनकम के आपने पता दो एडजस्टमेंट है, एक्रूड एंड अनअर्न्ड। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज जस्ट लाइक अनअर्न्ड इनकम। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड ऑफ द ईयर है तो वो हमारा अनअर्न्ड इनकम है, तो एंड में अनअर्न्ड है उसको हमने लेस करना है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसको हम ऐड करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस मिला था तो लास्ट ईयर अनअर्न्ड था, इस साल वो अर्न हो गया तो इसलिए हमने उसको ऐड करना है। तो द एडजस्टमेंट ऑफ अनअर्न्ड एंड एक्रूड इनकम टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 3 दैट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट
is an important part of financial statement. It is prepared by every business and non-business organization. It is prepared at the end of the year and it consists of all assets and liabilities. As you have already prepared in 11th standard, you know, the left hand side will be liability side. Amount to be assets. Amount बैलेंस शीट के लिए we will use the word as on. Balance sheet is prepared at the end of the year on a particular date. We use the word as on. It implies that all assets and liabilities which are shown in the balance sheet are on 31st March 2020. What was the position a day before and what was the position a day after, that is not clear. So we use the word as on, मतलब उस विशेष तिथि को हमारी आर्थिक स्थिति एनपीओ की क्या थी वही रिफ्लेक्ट करती है बैलेंस शीट। इसके लायबिलिटी साइड में आपके क्या आएगा, कैपिटल को यहाँ कैपिटल फंड बोलेंगे एनपीओ में, और कैपिटल फंड में हम है ना एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज को ऐड करेंगे, सरप्लस आएगा करंट ईयर का तो ऐड करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड करेंगे, डेफिसिट आया करंट ईयर का तो लेस कर देना है, और फाइनल अमाउंट कैपिटल फंड की आ जाएगी। इसके अलावा कोई एंडोमेंट फंड है जैसे प्राइज फंड है तो एंडोमेंट फंड भी अलग से मेंटेन किया जाएगा और उसको हम यहाँ लिखेंगे। जो एंडोमेंट फंड में कितना रुपया किस डोनर ने किस पर्पज से दिया वो अलग से रखा जाता है, और उससे ब्याज इन्वेस्टमेंट करने पर ब्याज की इनकम होती है वो इसी में ऐड की जाती है, और उस फंड में से जो पैसा हमने यूज कर लिया वो घटा के क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा। अगर किसी फंड का जितना अमाउंट है उस पर्पज में उससे ज़्यादा हमने यूज कर लिया तो जो राशि कम पड़ी ना दैट विल बी चार्ज फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। अदरवाइज जनरली द एंडोमेंट फंड विल हैव क्रेडिट बैलेंस, वी विल हैव समथिंग इन दैट फंड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, सो एंडोमेंट फंड विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड। उसके अलावा जो हमारा करंट लायबिलिटी है वो सारी आएंगी, कोई सर्टिफिकेट क्रेडिटर है, बिल पेबल है, अगर एनपीओ ने कहीं से लोन लिया हुआ बैंक से तो वो सारी लायबिलिटी आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आएंगे, और अनअर्न्ड इनकम या अनअर्न्ड सब्सिशन है, सब्सिशन रिसीव्ड एडवांस है, वो हमारे लायबिलिटी के पार्ट होंगे। और एसेट साइड में वही लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाया जाएगा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सिशन एट एंड ऑफ द ईयर है तो वो हमारा जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, क्योंकि वो हमारे इनकम का सोर्स है। हम एक्रूड वर्ड यूज नहीं करते हैं, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि अगर कोई मेंबर है करंट ईयर में सब्सिशन नहीं दिया तो वो नेक्स्ट ईयर जरूर देगा, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ अवर एसेट्स। इसके अलावा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारी एसेट्स है वो आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई पवेलियन है या